and how RCS is determined by measuring some certain quantities या थोड़ी बहुत prediction करनी पड़ती है, ठीक है? Like taking the whole airplane as a sphere or as a cone, and then considering like that, फिर उसकी subsections. So what is the definition of RCS? जी. Radar cross पहले sectional से area. आपको पता है. RCS. Number of pulses hitting an object. It's area of the target. ठीक है. लेकिन physical area नहीं है. It's electrical area. Somehow. Yeah, proper definition. The target intercepts a portion of the incident power. ठीक है. EI. Incident power जो power target पे hit कर जाती है. और that's power density. यानी per unit area में per unit solid angle में कितना power उस पे hit कर जाता है, incident power. The target intercepts a portion of the incident power and re-radiate it in various directions. फिर वो direct जो है सिर्फ अपने रडार की तरफ सारा बैक स्कैटर नहीं आता, थोड़ा बहुत re-radiate जो दूसरी direction में स्कैटर सारा हो जाता है. The measure of the amount of the incident power intercepted by the target and re-radiated back in the direction of the radar is called RCS, given by sigma, and is given by the relation the power density of the echo signal at the radar. Power density of the echo signal at the radar, okay, at the target, at the radar. दोनों में फर्क है. इंसिडेंट पावर जो है वो टारगेट पे लग रहा है और फिर वापस रिसीव पावर हम एट द रडार रिसीविंग एंटेना जितना आपने ट्रांसमिट किया, दिस इज पावर डेंसिटी, दिस इज पावर, दिस इज पर सॉलिड एंगल पर स्फीयर, द टोटल इज पावर डेंसिटी. ज्यादा पावर डेंसिटी आपकी टाइम्स सिग्मा, बड़ा टारगेट छोटा टारगेट, ज्यादा पावर कम पावर per unit area. So the received power density या backscatter, that's called backscatter. ठीक है? Backscatter is the power we received, या echo भी कह सकते हैं, लेकिन echo क्योंकि एक layman language में है, we call it backscatter technically. ठीक है? The radar cross section sigma has unit of area meter square and it is characteristic of a particular target and is a measure of its size as seen by the radar. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले RCS क्या चीज़ है, it's the size of the target. लेकिन जब when we are talking about characterization of the RCS, so it means कि आप बहुत सारी चीज़ें, ये कैसे आएगा हमारे पास size, आंखों से देख तो नहीं सकते, ठीक है, so we have to do some measurements, some predictions to categorize RCS sigma, ठीक है. So the radar cross section of a target is the fictional visualization. अब जिस तरह मैंने बताया ना, देख नहीं सकते, we are just in fictions, sort of suppositions, assumptions, you can whatever you say, calculation, prediction. Area intercepting the amount, that amount of power which when scattered equally in all direction. Which phenomenon is important in this case? Scattering. Okay, so आपको पहले मैंने थोड़ा बहुत scattering का बताया था. Today we'll discuss it in detail. Scattering is a phenomenon, just like reflection, just like refraction, just like diffraction. It's a phenomenon of the electromagnetic waves through which they have got certain behavior. ठीक है, आपको कुछ electromagnetic phenomena बताए थे. Ducting, जब वेव जो है वो एक पाइप के अंदर, वर्चुअल पाइप के अंदर कैप्चर हो जाती है. These are phenomena, these are some processes which happen with the electromagnetic signal at different frequencies. Frequency पे इसका बड़ा रोल होता है. Certain frequency पे कुछ phenomena होगा, दूसरी frequency पे नहीं होगा. ठीक है? So here the important part is scattering. Okay? The amount of power which when scattered equally in all directions produced an echo at the radar equal to that from
from the target, or another terms, power reflected towards the source per solid angle divided by incident power divided by 4 pi. ठीक है? So again, equation in somehow different form is reflected E electric field divided by incident E incident electric field square magnitude square and 4 by r square limit r tends to infinity. R tends to infinity gives you the idea of far field approximation. So cross section different from the perspective of near field approximation, near field in the far field different cross section. अब चूंकि हमने fictionally इसको measure करना है, so दोनों cases में calculation will be different. ठीक है? What is R? Distance between radar and target. ER, strength of the field at radar. Strength of the incident electric field at the target. ठीक है? ये भी measuring where. This is at the radar and this is at the target. Radar का radar receiving antenna और target का target के metallic body. ठीक है? तो सबसे पहले assumptions हम ये करेंगे कि जो RCS of the object है, यानी जो आपका airplane है, वो किस shape में है. For example, we are taking here a sphere. एक airplane है in the form of a sphere. ठीक है? No tip, पूरे sphere है. ठीक है? That's why we are using 4 pi r square. 4 pi r square is what? It's the size of the sphere. ठीक है? Which size? Not volume but surface area. So the bigger the radius, the bigger is the surface area. So अगर हम कहते हैं कि बड़ा एयरप्लेन है, so हो सकता है वो लेंथ में ज़्यादा हो, विड्थ में कम हो, लेकिन taking an approximate spherical size of it. ठीक है जी? So scattering and diffraction is important part of it. लेकिन इस स्लाइड पे जाने से पहले let me show you few things like this one. Okay. So what we discussed so far is we have a radar. It's got some spherical wavefronts in the far field. Radar. They are plane waves. Plane waves hit the target, and we have scattered waves everywhere. Scattered field. ठीक है? अब इसमें एक फिनोमेना है कि एक वेवफॉर्म जो है यहाँ से डिफ्रैक्ट होके इसके साथ वापस आएगा. Yes sir. If this is a spherical shape, ठीक है? तो एक वेवफॉर्म जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस आके इसके साथ फिर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन टाइप ऑफ इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा. वो हमने डिस्कस करना है. इस स्लाइड को भी इट्स मोर और लेस अगेन द डेफिनेशन. Radar cross section is the area intercepting the amount of power which, if radially isotropically, produce the same received power in the radar. So दो बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पर. Radiated isotropically से मुराद कि ये वाला object is a sphere, ठीक है? And we are assuming कि जितना power जो कि directed power था, narrow power था, वो यहाँ पर आके scattered हो रहा है equal in all direction. तो power तो that's why we have scattered. So this is behaving like a isotropic antenna, and this one is a directed antenna with a high directivity and gain. ठीक है? क्योंकि ये तो naturally हो रहा है ना. यहाँ पर तो आपने purposeful antennas लगाए हुए हैं, उसके directors लगाए हुए हैं, reflectors लगाए हुए हैं. समझ आ रही है the difference between this part and that part? ठीक है? In terms of isotropically producing the same received power in the radar. So to characterize how the target reflect energy to the radar by characterizing an effective electrical areas of the RCS. RCS is an effective electrical area that scatters the power density. ठीक है? मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देख रहे हैं. Nothing else. अगर आप कहते हैं कि ये फिजिकल एरिया है, तो वो तो मुख्तलिफ शेप्स की फिजिकल एरिया मुख्तलिफ होती है. ठीक है ना? If the shape is like this, for example, तो इसका फिजिकल एरिया जो है ये कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली एक टिप के साथ डिफरेंट है.
ठीक है, और हालांकि ये भी सिंपल शेप है देन दिस वन, ठीक है. So physical surface area might be very very small, और यही physical area ही is creating the field, लेकिन हम उसको spherical form में approximate कर रहे हैं. इसीलिए वो एक जो आपको नीचे दिखाया था कि RCS is the size of the object measured by mainly two things, exact measurement and second is the prediction. ठीक है, अभी ये सारा कुछ सिंप्लीफाई केस पे लेके आ रहे हैं. वी आर नॉट सेइंग कि जो स्टेल्थ है इन्होंने यहाँ पर कोई एंटेना लगाया है जो डिसीव्स अस के हमारा ही सिग्नल रिसीव करके एंटेना में डाल के फिर उसको हाई रेशो पावर के साथ जो है ट्रांसमिट करें, नॉइस क्रिएट करें. ठीक है, वो अभी इस पॉइंट पे अभी नहीं आया. सो स्कैटरिंग एंड डिफ्रैक्शन क्या है? They are variation of the same physical process. When an object scatters an electromagnetic wave, the scatter field is defined as the difference between the total field and the presence of the object and the field that would exist if the object were absent. It's the ratio of the difference between the total field and the presence of the object as if the object were absent. ठीक है, it's just किताबी definition है. Effectively, it just depends on lambda or frequency, वो अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं. On the other hand, the diffracted field is the total field and the presence of the object. Okay. So diffraction, और अगर आपने FSC में नाइफ एज डिफ्रैक्शन का पढ़ा है, तो डिफ्रैक्शन ये फिनोमेना है जहाँ हम कहते हैं कि एक रे इज कमिंग, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस नाइफ एज it has got part of it going down like this. That is what is knife edge diffraction. नेचुरली एक फिनोमेना है कि जो वेव है जब इस एज से टकराती है, और स्कैटरिंग इज के अगेन फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन इज फॉलोइंग, लेकिन स्कैटर्ड हो जाता है और कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ. हाँ, स्कैटरिंग इज लाइक दैट. या यू कैन थिंक ऑफ कि एक ऑब्जेक्ट है, इफ दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड वन रे इज कमिंग एंड इट मेक्स टू रेज. This is a very simple interpretation of scattering. You got two coming here, one goes there, one goes there. ठीक, that's scattering. वो कैसे रहा होता है by again following diffraction. लेकिन ये जो थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर आ रही है because of the object के साथ interaction की वजह से उसमें कुछ एनर्जी जो है लीक आउट भी हो रही है. That's what is scattering. ठीक है. With radar backscatter, the two fields are the same, and one may talk about scattering and diffraction interchangeably. Okay? So it's the diffraction and scattering responsible for the reflected E. Okay? Incident E है, incident field and reflected field. Okay? अच्छा, characteristic में typical values देख लेते हैं थोड़ा बहुत. Insects, birds, creeping and traveling waves, fighter aircrafts, bomber aircraft, ships. Again, you know the size of each object. Okay. On the right side, we have DBSM. What is DBSM? नीचे जीवन भी है. हमने एक स्लाइड में before midterm डिस्कस किया था कि we are taking every values in dB, और the area of the unit of area is square meter, so dBSM is 10 log 10 of sigma. ठीक है. जब आपके पास 40 dBSM की कोई शिप है, so that will be giving you an RCS. ठीक है. ये आपके पास 40 यानी एक शिप का जो dBm है, dBSM है, that is like 40. Just giving you an idea how big or small an object is. ठीक है, in terms of dBSM. या स्क्वायर मीटर में हम कह रहे हैं.
So 10,000 square meter का एक ship है. 10,000 square meter is huge. ठीक है, हम square root करेंगे 100 by 100 meter या 0.1 kilometer कितना होता है? 0.1 kilometer and 0.1 kilometer. ठीक है, मुझे नहीं पता. So 0.1 kilometer, 100 meters. 100 meters. 100 meters. Yes. छतों के हिसाब से देखेंगे तो 100 meters 6 floor से भी ज़्यादा होते हैं. Yes sir, वो 6 floor से ऊपर. हाँ, ठीक है. So a ship is of this building size. आपको पता है. So that is 40 dBs है. ठीक है. A fundamental equation of the RCS of an electrically charged large perfectly reflecting. This is again the biggest estimation. Perfectly reflecting. ठीक है. Again as I said कि size को हमने spherical लिया हुआ है. वो सारा ऑब्जेक्ट मेटल का बना हुआ है वगैरह वगैरह, उसमें कोई नॉइज वगैरह ये चीज़ें नहीं. The surface of area A will view directly by the radar as sigma is 4 pi a square or lambda square. So scattering only depends on the frequency and obviously the effective area. ठीक है. The bigger the size of the object, your target, the bigger is sigma. इफेक्टिव एरिया, अब यहाँ पर सिर्फ इफेक्टिव एरिया की बात हो रही है. ठीक है. और लैम्डा, असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि this wave has got certain lambda and this object has got certain size. ठीक है. और इनके आपस में comparisons के मुताबिक scattering होगी. Maybe if lambda is very small, no scattering. If lambda is very very large, then scattering. ठीक है. तो everything depends on young double slit experiment का जो लाइट मैं आपको दिखाया था कि if there is a slit size, एक तरफ से टॉर्च आ रहा है making nothing, जब स्लिट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं या छोटा कर देते हैं then things happen. दूसरी साइड पे young double slit experiment. सर इसमें एंगल होता है? एंगल B है but at the moment हम तो डायरेक्ट इंसिडेंट कर रहे हैं ना, एंगल B है. ठीक है. At the moment हमने एंगल को नहीं कंसिडर करना. ठीक है. So but the size matters. और size with reference to what? With reference to the wavelength of the incident wave. With reference to the frequency of the. अगर high frequency B में, I'm not saying कि वो it may go through the hole directly. Generally तो हम ये कह रहे होते हैं, but I'm not saying like that. लेकिन अगर high frequency B में, maybe no scattering. अगर low frequency B में, then scattering. So many times I told you these phenomena depends on the frequency. ठीक है? That is the biggest limitation जो हम high data rate achieve करते हैं, बालों का हमें problem है. क्योंकि the more the frequency, the more is the data rate. The more the frequency, the more is the data rate, the more energy in the signal. Again, high frequency, that's called a high frequency signal. High frequency signal has got more limitations. So that's why. And so many. ठीक हो गया? So next हमारा फिर होगा कि ये वाला एक ऑब्जेक्ट है और इस पे स्कैटरिंग मैकेनिज्म है. So taking each part of it specifically, ठीक है, like tip, like aerofoils या ailerons या body, ठीक है, और इनमें से scattering mechanism किस तरह है. ठीक है. So scattering mechanism are used to describe wave behavior, especially important for radar frequencies. Specular term is used for mirror-like reflection that satisfies Snell's law of reflection. ठीक है. Snell's law of reflection just mirror-like reflection है, incident angle पे exactly at the same reflected angle पे वो reflect हो जाता है. ठीक है. So study that Snell's law of reflection is termed for as specular. Surface waves, the body surface acts like a transmission line. The body surface acts like a transmission line. Transmission lines जो है वो भी अपनी नहीं बड़ी बार just take it just as a definition.
Diffraction is scattered waves originate at abrupt discontinuities. जिस तरह मैंने बताया ये वाला diffraction, ठीक है? So scattering is a different phenomena. Diffraction is a different phenomena. If you are taking the airplane and they are the same, if you are considering the airplane as a sphere, in order to just simplify the object, I repeat. If you are considering each part of the airplane, okay, then this behavior and this behavior shall be considered separately. Okay? Lekin if you are saying कि okay, I'm just detecting a bigger object and I'm thinking कि ये मेरे पास मुझे सिर्फ इतना पता चले कि यहाँ पर एक sphere है बस. So in that case, scattering and diffraction will be can be interchangeably used out there in this same. ठीक है खैर ये clear हो जाएगा आपको आगे. If there is let me just discuss this one. ठीक है. Okay, factors determining what RCS sigma depends on, या what factors RCS जो है वो हमने इसको भी generically थोड़ा सा discuss करना है. We have far field approximation. That's one point. Second, what are things of interest? The size of the target, the shape, and the material, and the orientation. Important part. ठीक है? क्योंकि if this is hitting like this, making a different angle, yeah, if it's hitting like this, the object is like this, the orientation of the object, okay, that's one thing. जब हम ज़्यादा advanced level पे लेके जाएंगे तो फिर ये चीज़ें important है. Target का size, target का shape, material तो है ही है, वो तो खैर हम material में दो चीज़ें ले रहे हैं, like metallic and plastic. ठीक है, yes और no वाली बात है. But अगर आप डिटेल्स में देखेंगे तो मटेरियल पे वही बात है, हाई कंडक्टिविटी मटेरियल हो सकता है, लो कंडक्टिविटी मटेरियल भी हो सकता है. ठीक है, थिंग्स लाइक दैट. पोलराइजेशन अगेन इट मैटर्स, फ्रीक्वेंसी इट मैटर्स, नियर फील्ड एंड फार फील्ड we discussed it, and then obviously scattering is different in different direction. So if you are using bistatic radar, then might be you got better reception than a monostatic radar. It depends on again the angle of incident, the angle of reflection. यानी वो जो target के चार जो parameters हैं, ठीक है? Yes. तो ये clear है? Bigger the size, यानी ये वाला from this slide. Like if you are threat view, if you take the threat view of the radar range equation, ठीक है? आप कहते हो कि मैं खुद जो है अपने आप को बचाना चाह रहा हूँ, इसको कंट्रोल कर. ठीक है? So you can only control this quantity. Meaning the smaller sigma, the less is the chances, and at the bigger sigma, so the more will be the received signal. ठीक है? बाकी parameters तो obviously जो दूसरा वाला part है, and other parameters you know, transmit power, transmit gain, spread factor, losses, and similarly on the from the receiving perspective, dwell time. So these are the old stories जो हम पहले देख चुके हैं. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. Finally this one. As I said, that scattering depends on frequency, जो कि optics में this is called lambda, आपको बताया पहले, ठीक है? So mainly we have three regions: optical regions, Rayleigh region, and near resonance region, which depends on the relationship between the lambda and the size of the object. A is the radius of the sphere. Okay? So if lambda is very very greater than A, bigger lambda means low frequency signal. If you are sending a low frequency signal first, and then you are keeps on increasing the frequency. Okay? So in the start, you will be in this region, Rayleigh region.
what is it? Lambda is too big than the object. If lambda is too big than the, sorry, lambda is bigger than the object and the frequency, या तो आप frequency ले लें या पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि electrical engineers use frequency और जो optics वाले हैं they use lambda, and they are inverse. तो इस वजह से confusion ज़्यादा आपको create ना हो, just take one quantity which is lambda. Okay. Lambda is too big than the object. Lambda very greater than A. In that case, this would be the graph. Then sigma is inversely proportional to the lambda 4. Okay. And this region is called Rayleigh region. And if you see, we have here radar cross section per sphere per solid angle. We have circumference per lambda. Okay. So these are dBs and dBs 1 over 1000, 1 over 100, and they are normalized values. Normalized means that 1 is the maximum. Okay. 1 is the reference. So this is the relationship. Clear? Similarly, optical region में you have 1 and this is the intermediate जहाँ पर थोड़ी सी optical region में क्या होता है? Lambda is very less than A and sigma is pi r square. Pi r square is the area of the sphere, which in this case is 1. 1 means you have normalized it, you have 1 it. Make it 1, made it 1. Sir, normalize आप किस सेंस में? Normalize ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ग्राफ की वैल्यूज जो एक्चुअल वैल्यूज है ना, वो लेट्स सपोज इट्स वेरिंग लाइक दिस, एंड ओवर हियर आई हैव लाइक 101 एंड ओवर हियर आई हैव 2052, ठीक है. अब इसी ग्राफ को मैं, दिस इज विद रेफरेंस टू सम एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है, इसको मैं जब नॉर्मलाइज करूंगा सो आई हैव द सेम पैटर्न बिटवीन 0 and 1, ठीक है. So telling someone कि this pattern matters, not these values, ठीक है, because the pattern is true for this graph as well as like for 1001 up to 1252 whatever, ठीक है. So normalize means with certain reference you are talking, and that reference is minimum and maximum and minimum is 0 and 1. इस तरह correlation होती है. Correlation is the relationship between two quantities. So 0 means no matching, 1 means perfect matching, and between variation. Okay. So object ये spherical दी गई है, ठीक है, and these were studied in optics, ठीक है. Optics में ये studies की गई कि scattering जो phenomena है वो अगर आपका वेव की जो लैम्डा है that is very greater than the size of the object, यही मैं अभी ड्रॉ कर रहा था यहाँ पर, in fact it is here, size of this object in terms of lambda, electrical length, size of this object in terms of lambda, and this they are compared with each other. तो उसके मुताबिक एक रे स्प्लिट होना है, 2 होने हैं, 10 होने हैं, स्कैटरिंग विल अकर अकॉर्डिंगली. स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है. लैम्डा इज वेरी ग्रेटर देन ए मींस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, साइज छोटा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है. तो इस तरीके से स्कैटरिंग होगी, व्हिच मींस के अब देखें एरिया जो है आपका इंक्रीज हो रहा है फॉर अ स्मॉल चेंज size. 2 by A is the circumference of the sphere. ठीक है? Yes sir. और उसके बाद optical region में it's constant whatever the change in the size. और ये वाला वाहिद रीजन है जिसपे B या resonance region, इसकी description आगे है, where there is this phenomena occurring, ठीक है. We have interference, constructive interference and constructive interference and destructive interference. You know the maximum value stands for constructive interference.
between what and what? Between this wave and then it come back. ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा फेस का आउटकम ज़्यादा हो गया या size of the object ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से, so then we have this resonance pattern where a constructive and destructive interference is there, and this region is me region, yeah, resonance region. Oscillations, backscattered wave interferes with the creeping wave. Backscattered wave और creeping wave. Creeping wave ये है कि वो sphere से diffract हो के वापस अपने ही उसी को destructive या constructive interference कर रहा है. जी. सर जो अभी अपनी sphere की बात की कि जो हमारी incident wave है वो जाके radio wave वो जाके उसके like around होके वापस आती है ये ऑप्टिकल रीजन नहीं, उसमें रेजोनेंस रीजन में ये होता फिनोमेना तीनों में है, लेकिन उसका इम्पैक्ट रेजोनेंस में ये एक ही ग्राफ है, ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना वो इधर डिफरेंट है, दरमियान में डिफरेंट है, उस तरफ डिफरेंट है, और ये इम्पैक्ट किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सिग्नल लैम्डा. सर मिडल वाला रीजन जो ये रेजोनेंस रीजन है इसमें जो हमारी ये ट्रांजिशन बैंड है, एक तरह से ट्रांजिशन रीजन है जी. तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है हमारी इंसिडेंट लैम्डा, हाँ. तो फिर ये फिर स्पेयर के राउंड होके वापस आएगी. हाँ. और जो स्टार्ट वाला ये जो रीजन है रेले रीजन इसमें क्या होता है फिनोमेना? ये स्कैटरिंग फिनोमेना तीनों में है. आप शायद थोड़ा सा लेट आए. दिस इज स्कैटरिंग. ओके, what we are saying is the object is a perfect sphere. Okay, first assumption, the object is a perfect sphere to simplify the scenario. ठीक है, फिर हम कहते हैं we have incident waves. Incident waves जो है वो plane waves बन जाते हैं like in the far field. फिर होता ये है कि this incident waves यहाँ से टकरा के इसके around एक phenomena generate करते हैं, जिसके नतीजे में you have got waves leaking out. Like you can say this wave is making parts. ठीक है, एक part one इधर चला गया, part two इधर गया, बाकी remaining जो है ना, so leaking out everywhere. So some leakage over here as well. So it's a sort of like the wave is coming around and interfering with the one that is incident one. ठीक है, अब ये सारा phenomena जो है इसके तीन हिस्से हैं. It depends on the size of this object and the lambda that you are sending. Lambda क्या है? Lambda, these are the plane waves and this is the lambda. ठीक है? This length is the lambda. These are the plane waves. अब ये करीब है या दूर है तो उससे ये सारा कुछ चेंज होगा. Oscillation is lambda is the operational frequency. ठीक है? अब ये स्कैटरिंग का जो फिनोमेना है कि one wave scattered into 2 or 3 or 1000 or 1000, it depends on the size and as well as lambda. तो उसी हिसाब से आपके पास तीन रीजन बन गए. इस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं लाइट की पर्सपेक्टिव में. ठीक है, लाइट वेव्स इसी तरह मुख्तलिफ लैम्डास के साथ जो है वो मुख्तलिफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ. So what we are doing here is like we are changing lambda. यानी ये वाला जो पार्ट है ये at 1 lambda, this is at lambda 2, this is lambda 3, lambda 4. तो जब आप lambda को वेरी कर रहे हैं like for one object of the same size, या तो lambda चेंज करें या फिर object size को चेंज करना मुश्किल है, lambda को चेंज कर रहे हैं. ठीक है, so for different values of lambda with respect to a, which is size of the object, so you keep on increasing lambda. ठीक है, तो जैसे आप lambda को increase कर रहे हो, तो if the lambda is very much bigger than a, you have got this behavior. तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि शुरू में जो है वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा है या कम. अगर आप इस तरह पूछ रहे हैं तो यहाँ से वाज़ेह है कि over here I am saying my size is perfect.
तो ये जो रीजन है ये प्रॉब्लमेटिक रीजन है. Thus, pi r square is equal to 1 means perfect size. Optical region शायद is like you see it and you got it कि what is it. Sir, optical region किससे print करेंगे? Optical region वो region है जहाँ पर values 1 हो जाती है and 1 is our normalized value. We have taken a sphere of radius 1, of size 1, not radius 1, of size 1. And the size is pi r square. So at what r pi r square makes 1. ठीक है जी. तो ये इसके डिस्क्रिप्शन है. थोड़ा सा मैं आपको रीड आउट करा देता हूँ. The 3 regions. Red है. First one. RCS shown is a function of its circumference measured in wavelength 2 pi a over lambda, where a is the radius of the sphere and lambda is the wavelength. The plot consists of 3 regions. Rayleigh region, the region where the size of the sphere is small compared with the wavelength, is called the Rayleigh region. ठीक है, Rayleigh एक scientist था, बस उसी के नाम से. Rayleigh scattering region is of interest to the radar engineers because the cross section of raindrops and other meteorological particles fall within the region as the usual radar frequency. So again, what frequency you are using आपके लिए problems accordingly है. यानी due to rain, due to snowfall, due to other weather conditions, sunny day, daytime, nighttime, at that particular frequency जो है Rayleigh region is dominant. Other frequency maybe Rayleigh जो है वो dominant ना हो और दूसरी region में problem हो. Optical region is the region at the other extreme from the Rayleigh region where the dimension of the sphere are large compared to the wavelength. Okay? 2 pi a over lambda. For large 2 pi a over lambda the radar is very greater than a. For large 2 pi a over lambda the radar cross section approaches the optical cross section pi r square. And me, our resonance region between the optical and Rayleigh region is the me. Me भी scientist का नाम है. The cross section is oscillatory with frequency within this region. Maximum value is 5.6 dB greater than the optical value, while the value of the first null is 5.5 dB between the optical value. First null क्या होता है? ये शायद रह गया है, कभी आया नहीं. सर ये नहीं आता. First एंटेना की पर्सपेक्टिव में हाफ और बीम विड्थ की जो लाइंस थे ना, उनको बोलते हैं फर्स्ट लाइंस. हाफ और बीम विड्थ ये कैसे होता है? तो एक केरे डायग्राम बना के बताओ. चले मेन लोब आप ले रहे हैं तो फर्स्ट नल के बजाय मेन लोब के जो the value of the main lobe is 5.5 dB below the optical value. In other words, एंटेना से आपकी जो वेवफॉर्म जाती है, it's not always like this. There are side lobes and main lobes. ये अच्छे से जाती है. So ये आपको हाफ पावर पॉइंट्स थे. ये इस तरह दूसरे something like this. Okay. So obviously the first null is this one and the main lobe. साइड लोब हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. अगर आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, नैरो बीम होगी, ये साइड लोब्स होंगी नहीं. ठीक है, वी हैव प्रोज एंड कॉन्स विद द हाई फ्रीक्वेंसी, सो हम लो फ्रीक्वेंसी भी यूज करते हैं. क्रिटिकल वैल्यू ऑफ लेकिन 5.5 dB ग्रेटर और लेस से क्या बना दे द साइज इज, अगर हमने 1 लिया हुआ है और हम उससे कह रहे हैं 5.6 dB ग्रेटर देन द ऑप्टिकल वैल्यू, मतलब क्या है? You are considering कि the object is bigger. Actual में वो bigger नहीं है. इन आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि बड़ा एयरप्लेन है, हालांकि होगा वो शायद छोटा, या शायद हो सकता है वो कोई बर्ड हो या जिस तरह उसका 5.6 dB आपको ग्राफ दिखाया शुरू में. उसका ये क्यों difference
नहीं वो this is approximation या estimation that by calculation mistakenly you are taking 5.6 dB greater than that. ठीक है? So you see 5 dB and 20, 0 and 20 dB को 10 dB and 5 dB is by that much bigger. Yes, sir. So if it's 100 square meter, This 20 this is dB. 25 square meter. So 25 square meter का difference. 5 dB. 25 square meters. थोड़ी सी. राहत It's not a small area. It's a big area. Yeah, basically हम अलग ये वाला जो काम है ना, पढ़ो। how can target cross section be determined? So you are doing measuring and you are doing prediction. Prediction. That's important. Both parts. ठीक है? कितना रहेगा बस खत्म हो गया. सर ये हम 2 से 3 क्लासेस में यही पा रहे हैं डायरेक्ट क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा ये दोबारा बताएं. सर 2 से 3 क्लासें हो गई हैं रडार क्रॉस सेक्शन नहीं पा रहे हैं कि ये कब खत्म होगा रडार क्रॉस सेक्शन खत्म हो गया बस. पिछली दफा तो ये नहीं पढ़ा ना. सर जी, पिछली पढ़ा दफा तो था. मैंने आपको वैसे सिंगल बड़ा पिक्चर दिया था लेकिन उसमें तो काफी सारी चीजें थी जो मैं अभी क्रॉस सेक्शन हम फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेल में पढ़ रहे हैं. इससे पहले आपको थोड़ा आइडिया देता कि क्रॉस सेक्शन मीन साइज ऑफ द Yes, ऑब्जेक्ट sir. एंड मीटर स्क्वायर. अब आपने उस वक्त पूछा नहीं कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पीछे कोई चीज है और मैं एक सिग्नल सेंड करूँ और वो वापस आके मुझे बताए कि इसका साइज इतना है. So it's very difficult to visualize at that time. लेकिन उस वक्त आपको भी इक्वेशन ज़हन में नहीं आया. क्योंकि what we are doing is सर जी मुझे तभी नहीं we are sending an electromagnetic wave and then हमारे पास received power आ रहा है और उससे we are calculating how much The size what of is the size of the object, जो कि इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि एक स्फेयर है और फिर मैं उसमें से DSP में से इसको प्रोसेस करके ये अपने रिसीव सिग्नल को SNR को मैं उसकी रडार इमेजिंग करूँगा. व्हाट इज रडार इमेजिंग? कि वो बहुत सारी वैल्यूज को फिर प्रोसेसर से गुजार के उसकी एक तस्वीर बनाएंगे. स्टेप साइज को इंक्रीज कर अच्छी रेजोल्यूशन Resolution. ठीक है. सो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अब डिपेंडेंट है. नंबर 1, हाउ मेनी पल्सेस यू आर सेंडिंग एंड यू आर टेकिंग बैक. और वो बहुत सारे पल्सेस वो हमारा ड्वेल टाइम है. ड्वेल टाइम हमारा यही है ना कि हम एक टारगेट को स्टार्ट से लेकर टिप से लेकर फेल तक हम उसको एक एक सिग्नल एक एक शॉर्ट पर से उसको हिट करते हैं और उन सब इंफॉर्मेशन को फिर अकॉर्डिंगली लेके इमेजिंग करेंगे. सो रडार इमेजिंग इज डिफिकल्ट. एट द मोमेंट वी आर सेइंग कि हमें ये पता चले कि स्फीयर जो है कितना बड़ा है. ठीक है. यानी एक एयरप्लेन है और उसके अराउंड एक स्फीयर हम बनाए और फिर हम कहें कि वो स्फीयर कितना बड़ा है. तो बेसिकली इसमें assumptions हैं. considering that airplane is a sphere. ठीक है. तो इस तरह नहीं होगा लेकिन ये किस तरह एक्सपेरिमेंट्स हो गए होंगे एक्चुअल रडार पे नहीं. Don't keep in your mind all the time कि एक्चुअल रडार है जहाज है. अब एक्सपेरिमेंट के लिए लोग क्या करते हैं जहाज को टेकन इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर फिर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट और उससे जो आपके पास रिफ्लेक्शंस आ गई उसको फिर थ्योरी में स्टडी करते हैं. ठीक है. तो इसको भी नेक्स्ट टाइम करेंगे. अभी हम बैक स्कैटर और शार्ट पल्स अगर पढ़ेंगे स्फीयर से और कोन से तो उसका हमको आइडिया हो जाएगा. जस्ट डिस्कस फ्रॉम हियर. जी नेक्स्ट टाइम. हाँ मैं भी फाहद ये लो. सर जी सर ये जो फर्स्ट लाइन है इसको असल में ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा. नल क्यों कहते हैं?